Good evening, guys. Today we are going to start with the accounting standard 16, that is the borrowing cost. Borrowing cost is nothing but it's a finance cost, that is interest. But before starting any accounting standard, first our aim is to revise all accounting standard names on the daily basis. So first one, beta, disclosure of accounting policy. S2 is inventory valuation. 3 is a cash flow statement. 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. 5 number is events occurring after net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policies. 6 is removed. 7 is construction contract. 8 is removed. 9 is revenue recognition. 10 is accounting for property, plant and equipment. Accounting standard 12 is accounting for government grant. 13 is accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 employee benefits. 16 borrowing costs that today we are going to see. 17 is segment reporting. 18 is related party disclosures. 19 is accounting for leases. 20 is earning per share. 21 consolidated financial statement. 22 is accounting for taxation on income. 23 is investment in association in consolidated financial statement. 24 discontinuing operation. 25 interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 investment in joint venture. And 28 is impairment of assets. 29 is provision, contingent liability and contingent assets. Friends, say good evening in the comment section. I hope you are done with your accounting standard 10 and 13 number. If you have any query, you can ask me today. Today we have to finish with the, yes beta, today what we have to finish? Yes, कौन सा standard आज finish करना है हमें? Accounting standard 16, that is the borrowing cost. Borrowing cost today we are going to finish it. चलिए बेटा. यस बसवराज जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. आज सब लोग छुट्टी के मूड में है कि बेटा दशहरा के? बेटा छुट्टी सीए स्टूडेंट्स को नहीं होता है. सर हेलो गुड इवनिंग. टुडे इट इज आवर फेस्टिवल फॉर अस इन तमिलनाडु. वी हैव अयोध्या पूजा फेस्टिवल. I will attend recorded classes. I'm not able to attend live. Okay, no problem बेटा. I know त्योहार के दिन है. Yes, how many of you are attending in today's live session? Because today we are going to start with fresh accounting standard. तो fresh accounting standard होगा तो हमें ये अटेंड करना ही है. दुर्गा पूजा का ये रीजन देके आप लोग अटेंड नहीं करोगे? बेटा ऐसा नहीं करते. Festivals are secondary to achieve your goals. Yes, today in our हमारे भी घर में बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि फेस्टिवल का. आज मैं भी पूजा करने के लिए गया था, बट स्टिल टेकिंग योर क्लास. यस्टरडे आई हैड वन फंक्शन वेयर आफ्टर योर क्लास बेटा, आफ्टर योर क्लास आई लेफ्ट पुणे एट 2 o'clock एंड 2 o'clock से लेके आई ड्रो इट फॉर ऑलमोस्ट कितना घंटा, 4 hours, 2 to 6 ये ड्राइविंग किया. एंड आफ्टर दैट बेटा 6 to 9 फंक्शन अटेंड करके रात को 2 बजे लेक्चर, 2 बजे मैं आया पुणे में. एंड आफ्टर कमिंग टू पुणे एट 2 o'clock, आई फर्स्ट सेशन आई कंडक्टेड एट 7 o'clock. 3 to 4 hours. इतना थक गया था ड्राइविंग करके, बट दिस इज अ कमिटमेंट. मैं आज भी आपको इतना ही बोलूंगा कि सीए करना है तो फेस्टिवल्स एंड ऑल आर सेकेंडरी फॉर यू. सभी चीजें सेकेंडरी हैं, ये ध्यान में रखिए. अभी करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी. आई वोंट फोर्स यू, बट ये याद रखो, लास्ट के 3 months पढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं होता है. यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एंड सेशंस. आई थिंक yesterday, how many of you, tell me genuinely, how many of you have completed your homework, your 100 pages book and your 400 pages book? Yes, yesterday's homework, sir, done. Yes, Basoraj ji. How many of you have done your 100 pages का homework and 400 pages? जल्दी बोलो बेटा. कमेंट सेक्शन में रुका हूं मैं. No beta, dividend column you can't, you don't have to prepare.
You can prepare P&L account. Very good, Rahul Patel. Family is going for the Durga Puja, but I am attending the live session. I am sure that it will pay me in future. Very good, beta. Yes, true, 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 true. Very good. ठीक है. I think tomorrow you have holiday. Yes, tell me in comment section. Do you have tomorrow session or no session? और छुट्टी भी ऐसी है ना बेटा, मेरे दिन पे कभी आती नहीं है. हाँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 days in a week, but any holiday is not on these 4 days. ठीक है. यस, टुमारो यू हैव हॉलीडे. गुड. तो चलो कल और ज्यादा पढ़ लेना. टुमारो कंप्लीट योर बैकलॉग एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. क्या सेशन है सर? क्या होगा इसको आज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, borrowing cost. So before starting any standard, चलो. Very good. ताई एक चाह सांग ना बघता है. बोरोइंग कॉस्ट में फर्स्ट वन. अच्छा, एक हल्की सी एक गुड न्यूज दे देता हूं आपको. गुड न्यूज इज दैट कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अदर सब्जेक्ट्स आफ्टर दिवाली. तो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन इट ऑन फेस टू फेस बैचेस तो नहीं होगा, तो जूम बैचेस, एंड व्हेन यू वांट टू इंटरेक्ट तो यू कैन अटेंड इट. आप लोग यस दशहरे के दिन पे यस मैं मेरे चैनल पे आपको बता ही दूंगा व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. बट इट इज एसोसिएटेड विद द branch, not with our board of studies. It is associated with the branch which is near to Pune. So Pune के near branch में होगा, and you don't have to attend these lectures by coming to Pune. You can attend it on the Zoom and you can interact with me. Second thing, these classes are of costing and financial management. Two subjects I'm going to take. So almost 250 marks ka I will cover it. Those students who are interested in other topics of the accounting standards can, and those are comfortable in Hindi. Please, please, please make sure, because in Maharashtra these classes are going on. So these classes are in Hindi. So those students are which are comfortable in the Hindi, those students only please join these classes. Second thing, those who want to interact with me can attend these classes. Next one is all study material questions will be covered in this, and your board of studies lecture also there. But those students who want interaction and those who are very comfortable with me can attend those classes. Okay, से उसके लिए आपको यस दशहरे के दिन पे मैं अनाउंस कर दूंगा. सो ज्वाइन कहाँ पे करना है? तो अपने इंस्टीट्यूट के ही ब्रांच में आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है. ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज्यादा बेनिफिट लोगे मेरे साथ इंटरेक्शन करने का. फायदा होगा उससे, ऐसा अभी आई वोंट से कि आपने सब नहीं करना चाहिए. दोज हु आर कंफर्टेबल, कि जो हिंदी में एकदम अच्छे से समझ लेते हैं लेक्चर को, तो उनके लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आगे. क्योंकि देखो बेटा, आई कान टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहां पे जो क्लासेस होते हैं वो ब्रांच की एक्टिविटी होती है, तो थोड़ा बहुत पैसा उनका थोड़ा बहुत होगा, बहुत नहीं होगा, थोड़ा सा रहेगा. तो आप लोग उसको देख सकते हो. बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल भी थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा तो उसमें. एंड लाइव लेक्चर जिनको रोज सुबह 5 बजे उठना है, वो लोग लाइव में आ सकते हैं. डेली क्लासेस रहेंगे. ओके, चलिए. यस बेटा, इट विल बी हिंदी प्लस इंग्लिश. सब डिटेल्स आपको परसों आ जाएंगे. अच्छा, कल 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 में एक आफ्टर ब्रेक वी विल surely yes, वन टेलीग्राम चैनल. यस, आई विल मेक दी वन टेलीग्राम चैनल फॉर यू. तो आप लोग उसमें आपके डिटेल्स भी डाल सकते हो. मतलब इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू अकाउंट्स, यू कैन आस्क दैट इन on telegram channel. I will upload 400 pages book and 100 pages book on that channel on daily basis. Okay, प्लीज. पर क्या होता है कि आप लोग बाकी के इतना सारा चलता रहता है, तो दैट विल बी ओनली फॉर योर बेनिफिट. इतना ही मैं करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा. ठीक है, चलिए. सो स्टार्ट करते हैं.
मॉर्निंग 5:30 को क्लास रहेगा, वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मॉर्निंग 5:30 to 7:30 विल बी द क्लास। आपको आदत लगानी है और बाद में यू विल गेट रिकॉर्डेड वन ऑल्सो। चलिए, एवरेज शायद 3 से 4 होगा बेटा, 3 to 4K प्राइस। ओके, चलिए स्टार्ट। Why this accounting standard? First one, what is the borrowing cost? Borrowing cost is nothing but it is interest. Borrowing cost is interest. Borrowing cost क्या होता है बेटा? Interest होता है. Borrowing cost, normally interest is the expenditure which you transfer to P&L account. Normally borrowing cost कहाँ पे transfer करते हैं हम लोग? In P&L account. But see here, now see, borrowing cost, this is your P&L and balance sheet. Direct entry students. You paid cash, so your cash goes down, so your asset reduces. Now the question is, interest normally we record it in the P&L. Direct entry students, for your conceptual clarity, I will suggest you first watch our institute sessions of foundation if you want to clear your basics. Okay, आपको आपके बेसिक्स को और क्लियर करना है तो आप क्या करो, हमारे फाउंडेशन के लेक्चर्स देख लीजिए जहां पे मैंने बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट बनाए। सी बेटा, दिस मैक्सिमम स्टूडेंट्स are from my foundation based students. They are already attended my foundation sessions and they have cleared their exams and therefore they joined these ICAI classes. So you are making it very popular. मैं खुद बोलता हूँ कि आप ही लोग हो जिन्होंने इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स को इतना पॉपुलर बनाया हुआ है। We are faculties are here. Yes, no doubt in that. We are giving our 100%. But after getting all concepts clarity, and you passed your foundation exams through ICAI classes and you are only hero. हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो आपको पार्टिसिपेट, वी आर मेंटोर्स, बट अल्टीमेट हीरो एंड हीरोइंस आप लोग हो जिन्होंने ये क्लासेस को पॉपुलर बनाया हुआ है। तो मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, माय फाउंडेशन students, they are very strong in accounts. Okay, I know because I already taught them accounts from scratch, zero to hero. So if you want to become hero like them, you have to just attend my foundation classes, batch number 7, playlist में जाइए, playlist में you will get first 3-4 lectures देख लीजिए. If you attend first 3-4 lectures, your basics 100% will get improved. Okay, 100% आपका basics clear हो जाएगा. I hope कि मैं आपको बराबर बता रहा हूँ. Yes, those who already attended my foundation classes, बेटा, please tell me it in the comment section. How was your experience? आपका experience कैसे था हमारे साथ? ये एक बार मैं भी comment section में पढ़ के बता दूंगा. Okay? Yes. Okay. चलिए. So डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी आज एक नसीहत दे दी कि व्हाट यू हैव टू डू. तो पीएनएल में इंटरेस्ट डेबिट होता है सर. नॉर्मली पीएनएल इंटरेस्ट इज व्हाट, आई हैव टेकन 1 लाख का लोन, 1 लाख का लोन. सो हाउ माय लोन विल बी लुक लाइक, माय बैंक बैलेंस 1 लाख एंड लोन 1 लाख. Then I use this bank balance to purchase something, to do business, for my working capital, or for any fixed asset I will purchase from this loan. Okay, then after these purchases, चलो, यस, वेरी गुड. सो बैंक अकाउंट इज 1 लाख का बैलेंस है, लोन मेरा 1 लाख का है. अभी
यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 लाख का लोन एंड दिस, नाउ ऑन दिस 1 लाख आई हैव टू पे इंटरेस्ट, लॉजिकल, इंटरेस्ट लोन पे करना पड़ेगा। दिस इज माई बैलेंस शीट, एसेट साइड पे बैंक, लाइबिलिटी साइड पे लोन। इंटरेस्ट इज excess amount which I'm paying above loan amount, above loan. Oh ho. So what is the treatment of interest? Interest को normally we consider as revenue expenditure. Normally हम लोग क्या consider करते हैं? Interest is treated as revenue expenditure. But here interest is capitalized. हम लोग क्या करते हैं सर? Interest को capitalize करते हैं. अच्छा सर, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, व्हेन टू कैपिटलाइज। सर इंटरेस्ट को एसेट में ऐड करते हैं, यस, इंटरेस्ट को एसेट में ऐड करते हैं। हाउ? दैट्स व्हाई S16 इज देयर। नॉर्मली इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर, बट S16 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट इज एडेड इन द एसेट। S16 क्या बोलता है? इंटरेस्ट इज एडेड। हम लोग इंटरेस्ट को एसेट में बताते, सर इंटरेस्ट तो खर्चा, अरे वही तो चीज बता रहा हूं ना, वही तो चीज बता रहा हूं। S16 क्या करता है? S16 एसेट में ऐड करता है इंटरेस्ट कॉस्ट को। यस सर, वी अंडरस्टूड इट ब्यूटिफुली। अच्छा, अरे वाह। Adi Jain is saying, I have watched your recorded lectures of foundation and I scored 72 marks in accounts. अरे वाह 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 आदि भाई, मस्त एकदम। Many students commented। अच्छा, तो इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं अंकुर भाई? इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ने हम एसेट में ऐड करने वाले हैं। कब ऐड करने वाले हैं उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को डिटेल में मैं सिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो S16, वेट एंड वॉच व्हाट S16 टॉक्स अबाउट। ओके, तो S16 क्या बोलता है? चलो चलो चलो, S16 क्या बोलता है? बोलो मेरे दोस्त, बोलो रे भाई साहब, बोलो बोलो बोलो। वैष्णवी सिंह नहीं, ये तो लक्ष्मी है शायद इसका नाम। शी इज टेलिंग आई गॉट 75 मार्क्स। अरे भाई, इतने सारे मार्क्स मिले आप लोगों को मेरे वजह से, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हम्म, सो इंटरेस्ट क्या करना है? यस, इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज। हाँ जी, बोरोइंग, बोरोइंग मीन्स व्हाट? बोरो एंड उसके ऊपर की कॉस्ट, बोरो करने की कॉस्ट, व्हाट यू आर पेइंग इन बैक? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज जो हम लोग पे करते, दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा, ओके सर, गॉट द कॉन्सेप्ट। चलो, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट। सो बिफोर ब्रेक बेटा, वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टैंडर्ड। 7:30 को पूरा स्टैंडर्ड में खत्म करेगा, 7:45 तक ब्रेक देगा, और उसके बाद लास्ट के 45 मिनट्स आपके मस्त क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। ओके, इंट्रोडक्शन, फॉरेन करेंसी बोरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बेटा, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स। Then qualifying asset, sir. What is a qualifying asset? Qualifying asset is an asset which takes a substantial time to get ready for its intended use. Wait, I will teach you. Don't worry. ये भी होगा क्वालिफाइंग एसेट। देन ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या होती है? बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट मतलब एसेट में ऐड करना, वही तो ट्रीटमेंट होती है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वी हैव टू ऐड इट इन द एसेट। Recognition criteria, sir. PP ka recognition criteria. If asset gives the probable future economic benefit and cost can be measured reliably, then asset may add hoga. That is the recognition criteria, sir. Two criteria over there. First one is what is the criteria? First one is asset probable that future economic benefit will flow to the enterprise. And second one, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो एसेट का वही तो बात है ना सर, एसेट को रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉग्निशन कब करेंगे? इफ टू क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड। हाँ जी सर, यस। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया? कमेंसमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। भूमिका चौहान 71 मार्क्स इन अकाउंट्स। अरे वाह,
foundation student. Very good, beta. Cessation, so commencement means when to start your capitalization. Asset में add करना. What is capitalization? Asset में add करना. So what is revenue? Revenue means P&L में डालना. P&L में डालना. Direct entry students. P&L is a income and expenses. And capitalization means asset में add करना. Okay. Very good, Prince. Then yes बेटा, S13 के नोट्स निशा मैं बाद में दूंगा. इंडेक्स सिप चाहिए आपको. चलो, cessation of capitalization. So when you are going to stop your capitalization, so आप आपका capitalization कब stop करने वाले हो, that we are going to see in this. And last one is nothing but it's a disclosure. So disclosure is the last part. Okay, so very easy standard. What we are going to see, introduction first. Yes, introduction में मोनिश को introduction. Loan given. Sir, loan is given by the bank to SS. SS को loan दिया गया है. Loan given. And SS paid interest. SS paid interest. ठीक है. SS ने interest pay किया. Loan given by bank to SS and interest is paid. Meaning, borrowing cost are interest and other cost incurred in connection with borrowing of funds. Borrowing cost includes interest and commitment charges. Number 2, amortization of discount or premium on borrowings. Number 3, amortization of ancillary cost relating to borrowings. Number 4, finance charges. Number 5, exchange difference. See, I know you won't understand interest and commitment charges. It's very simple. Interest and commitment charges. Commitment charges means while giving the finance, bank will charge you something. बैंक क्या करने वाला है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बैंक फीस जो होती है, ओके, प्रोसेसिंग फीस, उसको क्या बोलते हैं, बैंक की प्रोसेसिंग फीस. सो इंटरेस्ट इज नॉट ओनली एडेड बट योर कमिटमेंट चार्जेस इज ऑल्सो एडेड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट चार्जेस. अरे भाई, व्हेन यू आर गिविंग योर प्रॉपर्टी ऑन मॉर्गेज, सो दैट मॉर्गेज का ठप्पा लगाने को किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना. तो मॉर्गेज मतलब आपने कुछ गिरवी रखा, हिंदी में समझ लो. मॉर्गेज मींस गिरवी रखना. आपने कुछ गिरवी रखा तो भाई सामने वाले को वो गिरवी रखने का कुछ तो पेपर रहेगा ना, लीगल डॉक्यूमेंट. तो लीगल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो होते हैं, वो बैंक कहां से पे करेगी, आपसे लेगी ना. तो बैंक अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर सकती, सिर्फ गिरवी रख सकती है. तो गिरवी रखने का कुछ तो काम का पैसा देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज बैंक की प्रोसेसिंग फीस रे. तो बैंक की प्रोसेसिंग फीस कहां पे होगी, बैंक की प्रोसेसिंग फीस आप इससे ली जाती है, कमिटमेंट चार्जेस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट चार्जेस. क्या बोलते हैं इसको, कमिटमेंट चार्जेस. यस सर, वी गॉट दिस. ओके, सेकंड वन, amortization of discount or premium on borrowing. So what is the concept? Amortization means divide. Amortization means, yes, simply word is the amortization, मतलब divide करना. Suppose you have taken a loan of rupees 100. Okay, so you want to repay rupees 100 and taken a loan of rupees 90. 10 rupees is a discount. 10 रुपया क्या है रे भाई, 10 रुपया डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इज divided over life of the loan. So life of loan, suppose 5 years. So every year 2 rupees is called as amortization. So you can write this, repay rupees 100, loan taken, received 90. तो 10 जो है तुम्हारे जेब से जाएगा ना, तो जो 10 रुपया आपके जेब से जाने वाला है वो डिवाइड होगा 5 years, बिकॉज लोन इज रीपेड विद इन 5 years. तो उसको बोलते हैं amortization, डिवाइड ओवर 5 years. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. रीपेमेंट
Yes, loan taken is 90, repayment is 100. So 100 minus 90, 10 rupees. But 10 rupees is your extra payment. And this extra payment is called as discount. Okay? Amortization of ancillary cost relating to borrowing, sir. So ये क्या होता है? Amortization of ancillary cost, same. Ancillary cost means incidental cost, extra cost. This is also added. So finance charges, wait for some time. Accounting standard 19 will clear your concept. Okay. And exchange difference. Now what is exchange difference? Let's see it in the next one. Next इसमें आपको समझ में आ जाएगा. Okay. So for this point, pending. Screenshots after the class. Okay. After this understanding बेटा screenshot मैं दूंगा पर थोड़ा सबर कीजिए. Okay. So 5 borrowing cost is included. कितने borrowing cost है? 5 borrowing cost. Okay, understood? So it is not only interest, but commitment charges. That is a processing fees. Or discount or amortization of discount or premium on the borrowings. Ancillary cost be amortized karna hai. Finance charges which is covered under S19. So wait, S19 I'm not going to take it now. This part you won't understand. And exchange difference ये last में होएगा. मतलब पानी देना. Exchange difference ये last में होगा. Now, what is foreign currency borrowings? Foreign currency borrowings. Now, beta, you borrowed something from USA. Now, in USA, you borrow $1 at rupees 50. But what happens? 50 rupees, $1, 50 rupees. But for example, suppose you paid interest at the rate of 4% per annum. So 50 rupees पे 4% बोले तो 2 rupees. Interest in USA. Okay. Interest rate in USA is 4%. But now what happened, beta? When loan taken at that time, rate was 50. But loan is repaid after 1 year. So $1 is equal to 55. So how much you paid? 50 ka 5 rupees is exchange difference and foreign currency interest is 2 rupees. Suppose if this loan is taken in India, suppose India loan ka interest rate is assume 15%. How much? 15%. So 7.5. What is the 15%? 7.5. So you will capitalize 7 rupees and because India में सस्ता नहीं था, इंडिया में महंगा था, तो you will capitalize 7 rupees. But suppose you paid 7 rupees extra, okay, but suppose India में rate 10% था. How much is the India rate? 10%. So opportunity in India is more, opportunity cost is lower as compared to फॉरेन कॉस्ट. ओके, तो आपने 5 रुपए ही कैपिटलाइज करने का, 2 रुपया P&L में डालने का. कितना? 7 में से विच विल लोअर 5 रुपीज कैपिटलाइज करोगे, यू विल कैपिटलाइज 5 रुपीज एंड 2 रुपीज यू विल ट्रांसफर टू P&L. व्हाई दिस logic is very simple? If you are getting loan in India at lower price, so why to attract towards outside India? And remember, if you are giving extra amount outside India, that is because of exchange difference. That is but obvious. It is because of exchange difference, and exchange difference you will transfer to P&L whatever extra amount you are paying. I am giving you exactly 5 minutes to read this question. And tell me the answer. See, this question will make your concept 100% clear. I want to give you you 5 minutes. 5 minutes आपको मैं देता हूँ. टिकटिकी जी प्रकट हो जाइए. 5 minutes. Read this question. Read this question and answer it quickly. 5 मिनट में आपको दे रहा हूं.
यस बेटा, पार्थ मैं आपको वापस समझाता हूँ, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस. लास्ट 30 seconds. यू ट्राई दिस क्वेश्चंस बेटा, तो ही हो पाएगा. ओवर. यस. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. ऑन 1st April 2001, XYZ Limited has taken a loan. This date is called as बेटा 1st April को $10,000 into rupees 45. How much loan you have taken? You have taken in Indian currency, it is 4,50,000. Say yes or no. Say yes or no. Option 1. Foreign loan. Foreign loan beta $10,000 and interest is paid at 5% per annum. So $500 into rupees 48. Because after 1 year, you are going to pay 500 into 48. 24,000. 24,000. And $10,000. 48 minus 45. See, exchange difference. Because when loan is taken at that day, rate is 45. But when loan is repaid, rate is 48. So 10,000 into 3 rupees, you are paying 30,000 exchange difference. So how much you are paying beta? 54,000. 24,000 towards interest and 30,000 towards exchange difference. But if you are taken loan in India, 4,50,000 into after 1 year, you have to pay only 11%. See, loan is taken today. Here the rate is 45. After 1 year, rate is 48. So after 1 year, we don't have to see the rate. We have to see Indian conversion. That is 4,50,000 into 11%, 49,500. So you should capitalize only 49,500 and 54,000 minus 49,000, 4,500 will be transferred to P&L, where you will transfer the difference 54,000 outside India. Outside India, ये आपको it is costly, okay, and in India you have to pay. This is opportunity. Opportunity is only 49,500. So what you should consider, not 54,000, you should consider 49,500. So your answer is capitalized and 4,500 is transferred to P&L. Let's check how many of you have done the correct answer. Yes, I don't think you got the. How many of you got the correct answer? Mr. Pai, एक बार हिंदी में समझ लो बेटा.
एक बार हिंदी में समझ लो। ये ना आप लोगों की वजह से मुझे इंग्लिश हिंदी बहुत करना पड़ता है। यस। हाँ जी बेटा। हाँ जी। सी बेटा, इफ आपने यदि इंडिया से लोन लिया, इंडिया से लोन कब लोगे? आज लोगे। अबे आज कितने डॉलर्स आपने लोन लिया बाहर से? $10,000। पर इंडिया से लिया रहता तो आपको ₹45 तुरंत अपने इंडिया में गए रहते। इंडिया में जाके ₹45 से आपने कन्वर्जन किया रहता। जहां पे बैंकर्स बैठे रहते वहां से ₹45 में आपने कन्वर्जन किया रहता। एंड ₹45 से कन्वर्जन करके आपने कितना लोन लिया रहता? 4,50,000। करेक्ट है। 4,50,000 पे कितना परसेंट होएगा? 11%। 11% मतलब आपने कितना पे किया? इंडिया में आपने 49,500 पे किया। यदि आपने फॉरेन से लोन लिया होता, फॉरेन से लोन लिया होता, ध्यान देके सुनना, फॉरेन से लोन लिया रहता तो $10,000। फॉरेन वाला क्या बोलेगा? फॉरेन वाला बोलेगा भाई 5% इंटरेस्ट दे मुझे। ओके, यूएस वाला बोल रहा है 5% इंटरेस्ट दे। तो बोलेगा यस मैं 5% इंटरेस्ट देगा। $500, $500 तू कहां से लाएगा? तो इंडियन रुपीज में से कन्वर्ट करके देगा ना। तो इंडियन रुपीज से कन्वर्ट कब करके देगा? 1 साल बाद। 1 साल के बाद का रेट कितना है? 48। तो 1 साल बाद तू उसको $500 इंटू ₹48 देगा। अरे सर बस वो उतना नहीं देना है, ऊपर से ₹3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? जब लोन लिया था तब ₹45 था। रीपे करना है। रीपे कितना करना है? 48। मतलब ₹3 एक्स्ट्रा रीपे करना पड़ेगा। मतलब 30,000 वो भी लॉस हो गया। 24,000 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सस्ते में गिरा भाई, पर इंटरेस्ट के साथ साथ एक्सचेंज डिफरेंस भी पे करना पड़ेगा। लोन लिया था तब 45 से लिया था, लोन रीपे किया तब 48 से किया। 48 से लोन रीपे किया तो ₹3 एक्स्ट्रा दिया, ₹3 एक्स्ट्रा दिया तो $10,000 इंटू ₹3, 30,000 उसका पे किया। तो दोनों मिला के कितना पे किया? 54,000। 54,000 किसमें पे किया बेटा हमने? बाहर। इंडिया से लोन लिया रहता, पर इंडिया तो अच्छा नहीं लगता ना, बाहर अच्छा लग रहा है। सो इंडिया से कितना दे पे किया रहता? 49,500। हाँ, तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बोलता है? जो इंडिया में सस्ता मिल रहा है तो बाहर गया है, तो ऊपर का पैसा तूने जो दिया वो एक्सचेंज डिफरेंस का दिया। ऊपर का पैसा किसका दिया तूने? इंटरेस्ट का नहीं दिया। इंटरेस्ट तो इंडिया से बाहर सस्ता था, पर एक्सचेंज डिफरेंस, और एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में क्या बोल रहा हूँ? एक्सचेंज डिफरेंस बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 P&L में डालने का। बाद में सिखाएगा, बाद में सिखाएगा। ओके। सो S11 क्या बोलता है मामू? उसको P&L में डालने का, एक्सचेंज डिफरेंस को। यस। नाउ अंडरस्टूड? यस मिस्टर पई, you understood why 45? 45 is very simple. Logic is you are taking loan from India today, but you will take 48 minus 45 because you want to repay that loan in foreign. Foreign may you have to repay that loan, and therefore you have to pay ₹3 extra, and that is called as exchange difference. No exchange difference in Indian currency. Exchange difference will arise only in case of foreign currency. Only in case of foreign currency. Okay. निहारिका, निहारिका 4 और 2 ऐसा कुछ तो रहेगा कॉम्बो। ओके बेटा। अच्छा देवराज बस ना बेटा, कितना सॉल्व करवाएगा? देवराज समझा क्या नहीं समझा बेटा? बोल हाँ या ना। मिस्टर देवराज कैन यू टेल मी? बेटा एकदम सिंपल है रे। इंडिया में लोन लिया तो ₹45 से, आज आज का दिन का रेट देखने का, 1 साल के बाद पेमेंट करने का। तो ₹45 $10,000 से मल्टीप्लाई किया। बाहर से लोन लिया, बाहर से लोन लिया तो 5% डॉलर देना पड़ेगा। 5% का इंटरेस्ट रेट, $500 देने पड़ेंगे, 1 साल बाद देने पड़ेंगे। ₹48 सिर्फ वो नहीं देना पड़ेगा, एक्सचेंज का $10,000 भी लोन लिया है, ईएमआई लिया है तो बेटा देना तो पड़ेगा ना। सो $10,000 भी देना पड़ेगा, $10,000 देना पड़ेगा ऊपर से ₹3 एक्स्ट्रा, क्योंकि जब लिया था तब 45 रेट चल रहा था। रीपेमेंट के टाइम पे 48 देना पड़ेगा। ओके, तुझे तो डॉलर ही देना पड़ेगा ना बाहर वालों को। तो डॉलर देने के लिए तुझे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो ₹48 से कन्वर्ट होगा। Mr. Pai is saying yes, sir. Now I understood. Mansi saying, sir, clear, sir, clear. But it's given in the question, no? Capitalization we will do after 1 year. See, beta, we are doing it on the 31st March. So 31st March ko Mamta, we are doing this capitalization not today. We'll do this capitalization after 1 year. So on 31st March, you know already what is the exchange rate is going on. Okay. This is called as adjustment entry. Okay. जो final accounts में तो adjustment entry करती थी ना, वो adjustment entry है। शिवानी नहीं रे बेटा, पूरा एस में नहीं सिखाने वाला हूँ। यस।
चलो, मैं फॉरेन में होके इंडिया से लोन ले सकती हूँ, काई को? फॉरेन में सस्ता मिलता है ना, 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जापान में और सस्ता है भाई, 1% 2% है। वहां पे माइनस में इंटरेस्ट रेट चलता है, उल्टा देना पड़ता है। बीच में आया था एक रेशो, बाहर लोग क्या करते बेटा, इंटरेस्ट रेट कम करते। इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा, बिजनेसमैन पैसा मांगता है। सो बिजनेसमैन कॉल फॉर द मनी। ओके, ठीक है। देखो एकदम सिंपल है। आपको बिजनेस को प्रमोट करना है तो यू विल डेफिनेटली ड्रॉप डाउन इंटरेस्ट रेट्स। सर्वांशु जी, आई डू नॉट हैव एनी माय पर्सनल एकेडमी। यस बेटा, आपके इंस्टीट्यूट में नहीं, मैं सीए इंस्टीट्यूट के साथ ही मैं, हमारा टाइप है ओनली विद ब्रांचेस। ओके, चलो, नाउ लेट्स कम टू दिस। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट, प्रीमियम ऑन amortization of that, amortization of ancillary cost, finance lease not now, and exchange difference. Yes. Now what is qualifying asset? Qualifying asset means asset which takes a time to get ready. Sir, टाइम टू गेट रेडी, मैं मेरे वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट विच टेक्स अ सब्सटैंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जब आप एसेट का सब्सटैंशियल टाइम, एसेट इज नॉट रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, you bought one vehicle, you bought one vehicle, it is ready for use, from the next day you can drive it. But sir, you constructed one shed, shed banaya, shed. So that construction of shade will, and that shade is going to use by you only. You are not going to sell it to another person. So otherwise it will be construction contract. No beta, I am going to use that asset, but I will construct it first and then I will use it. So beta, it takes a substantial time. And what is substantial time? अरे वही तो next है. Substantial time means more than 12 months. मोटा मोटी 12 months. It can be 9 months, 10 months, or 14, 15 months. It's okay. But more than 12 months, yes, it's called as substantial time. Okay? Substantial. Okay? You got the concept? So, every asset? No, sir. Not every asset. Only those assets which takes a substantial time to get ready is called as qualifying. Qualifying under this accounting standard 16. Qualifying, it gets qualified under this accounting standard 16. Okay, so accounting standard 16 में जो qualify होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा। सर, चेक करवा दो, चेक करवा दो। देख बेटा, नहीं रही, देखो, क्वालिफाइंग एसेट हम लोग बात करेंगे बेटा इसके बारे में। Yes, this example I already covered. Qualifying asset, हाँ जी। Solve illustration 1 first. Yes, and tell me what is the qualifying asset. चलो बेटा, do this illustration 1. I am giving you 3 minutes. कितना मिनट?
3 minutes. Solve it fast. Over, beta. Any one of you? Whenever I'm giving you time to read the question, please do it seriously. And beta, you have to improve your patience to sit on one place for more than 2 hours. Then only you are going to become a CA. Make it sure. Chalo. See beta, PRN obtained a loan from a bank of 120 lakhs. कितने का लोन लिया है? 120 lakhs. On 30th April 2001. Let's understand. Construction of shed. Construction of shed is asset. Qualifying asset. It's a QA. Purchase of machinery. Sir, machinery is ready-made. So it is not qualifying asset. Working capital, not QA. Working capital means day-to-day current asset minus current liability. It's called as working capital. Day-to-day money. Next. Advance for purchase of truck is also not qualifying asset because purchase of truck is not qualifying asset. March 2002 means after 11 months. So construction of shed is almost 12 months. The machine was installed on the same day. Delivery of the truck is not yet received. Total interest charged by the bank is 18 lakhs. So now take a total. Interest is 18 lakh. And what is total loan amount? 50 plus 40. Do calculation.
50 plus 40, 90 plus 20, 110 and 120. सो कैलसी पे लीजिए बेटा 18 डिवाइड बाय यस शॉर्टकट ऑफ कैलसी 18 डिवाइड बाय 120 into first time into this is a shortcut into 50 is equal to 40 is equal to 20 is equal to 10 is equal to calci shortcut direct entry students calci shortcut otherwise every time you have to do 18 divided by 120 into 40 18 divided by 120 into 20 18 divided by 120 into 10 सो आपको एक ही बात बोलता हूं बेटा शॉर्टकट यूज करना है कैलसी पे क्योंकि 18 डिवाइड बाय 120 इंटू मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये पूरा का पूरा बेटा हमेशा क्या रहने वाला है ये कांस्टेंट रहने वाला है तो कैलसी को एक शॉर्टकट है सो 18 डिवाइड बाय 120 into 50 is equal to 7.5 will be capitalized 40 is equal to 6 20 is equal to 3 10 is equal to 1.5 this will be treated as revenue expenditure तो रेवेन्यू में कितना जाएगा 6 plus 3 plus 1.5 तो रेवेन्यू में जाएगा 10.5 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिखेगा 7.5 लेट्स चेक द आंसर लेट्स चेक द आंसर 10.5 revenue expenditure and capital expenditure 7.5 how to present the answer you can see here the presentation yes presentation at the end beta I will show you हाँ जी बेटा ये देखिए ये है प्रेजेंटेशन क्यूए एनक्यूए इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट इधर नीचे सिर्फ लिखना रहेगा ये लिख लो ये लिख लो ये लिख लो 7.5 के नीचे कैपिटलाइज एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर therefore 7.5 added to asset and 10.5 is transferred to P&L. ओके बेटा अरे से यस और नो देख लीजिए बेटा ये है आंसर ये आंसर है ठीक है अभी आप लोग एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो चलो वन क्वेश्चन यू डू बाय योर ओन वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू हाँ अगेन 3 minutes यस सेम क्वेश्चन है ओनली 6 assets चलो 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 सॉलिड यू हैव अगेन 4 minutes है 4 minutes चलो सॉल्व करो सेम क्वेश्चन
बेटा एसेट विच टेक्स मोर देन 1 ईयर केशव, बेटा 1 साल से जो ज्यादा लेगा टाइम उसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। जो एसेट जल्दी से आ जाता है, जल्दी मतलब रेडी टू यूज होती है एसेट, बेटा उसको हम लोग नॉन क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। बेटा रेडी टू यूज जब भी आएगा तब रेडी टू यूज होगा ना। ट्रक, अंकुर, जब एसेट आएगा तब रेडी टू यूज आएगा। चलो बेटा, व्हाट इज द आंसर? यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सर, 1 crore is equal to 100 lakhs. Remember, 1 crore is equal to how, sir? 1 crore in lakhs, 5 zeros cut करेंगे, so 100 lakhs. Okay, so 25 crores is equal to 2,500. It's very simple. Then 3,000 crores is 3,000. So I will convert it in lakhs, rupees in lakhs. 2,000. Sorry, it is 300. Sorry, it's my mistake. 300, 200, 50 lakhs, 50 lakhs, 100 lakhs, 80 lakhs. So all figures are in lakhs, not in crores. So take on calci. So this is not beta. This is the interest amount. What is the total of asset? Take on calci. 2,500 plus 300 plus 200 plus 50 plus 50 plus 100. So this is 3,200. And what is interest amount? Interest amount is 80 lakhs. So take on calci.
80 upon 3200 into calci 2500 is equal to 300 is equal to similarly up to 100 is equal to so take on calci 80 divided by 3200 into 2500 62.5 300 is equal to 7.5 5 1.25 1.25 2.5 see beta construction of ceiling across the two cities beta it will take time. Okay, so this is qualifying asset. And purchase of equipment, working capital, vehicle, advance for tools and purchase of technical know-how. It is not qualifying asset. तो ये capitalize होगा and revenue expenditure $17.5. Capitalize होगा 62.5 and revenue expenditure होगा 17.5. Let's check the answer. Yes, capitalize and this is revenue expenditure. I have considered it all rupees. You can write in rupees in lakhs also. Yes, you got the same answer. Have you got the same answer? Very good, beta. Very good. Yes. Pre का आ गया सबको. Very good. Calci shortcut. Very good, beta. Solve 11 number. Solve 11 number. चलो 11 number solve करो बेटा. You have 4 minutes. 11 number solve करो. 11 number. Every one of you will solve 11 number. फोर मिनट्स है आपके पास.
11 नंबर पे आ जाइए बेटा। 11 नंबर। चलो एक आपके लिए टेलीग्राम चैनल शुरू करता हूं। 11 नंबर। May 24 में, सॉरी पूरा बैच का नाम बताता हूँ, मे स्पेस 2024 न्यू बैच विथ एसएस। मे 2024 न्यू बैच with SS. Okay, so those who are very consistent can see this or you can join this group. तो आपको पूरा नोट्स का अपडेट, बाकी अपडेट्स भी इसमें मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो हरीश कंस्ट्रक्शन, and if possible do not send irrelevant messages. Okay, हाँ जी बेटा। Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. How many phases are there? 4 phases. It is expected that full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they are completed. Means now they put to use after they are completed. Following are the details of work done: building purchase and building cash expenditure. See, we are interested in 34, 64, 55 and 68. So beta 34, 64, 55, 68 are total expenditure. Total expenditure of all phases 221 and loan taken at the rate of 50%, 15% at the beginning of the year is 200. So 200 पे 15% means 30 lakhs will be your interest. Interest कितना है? 30 lakhs. During the mid of the current year, phase 1 and phase 2 become operational. Mid of the current year. So asset is put to use. Asset का put to use किया बेटा हमने mid of the year. So after 6 months, it's a revenue expenditure because you used that asset. Now you are going to use that asset. So it is now ready to use. And when it is ready to use, you will stop capitalization. But phase 3 and phase 4 are not ready to use. So here, phase 1 and 2 are ready to use after 6 months. 3 and 4, write down, are not ready to use. Are not ready to use. समझ में आ रहा है कि आपको? Phase 1 and 2 are ready to use after 6 months. So after 6 months, revenue expenditure when it is ready to use, and that I'm going to teach you after break. Okay. So देखो, first we will bifurcate 30 lakhs. Take on calci. 30 divided by 221 into 34 is equal to 64 is equal to 55 is equal to
68 is equal to 34, 64, 55, 68. 221. Sorry, take on calci. 30 divided by 221 into 34 is equal to 4.61. 62 you can write. 64 is equal to 8.69. 55 is equal to 7.47 and 68 is equal to 9.23. Okay, do this 61. Beta 4.61 plus 8.69, 13.3 is phase 1. And phase 3 and 4 is 16.7. Now, out of 13.3, 6 months capitalize and 6 months revenue. Out of this, 6 months. And 16.7 is fully capitalized. So 13.3 divided by 2, 6.65 revenue expenditure. And 6.65 plus 16.7, 23.35 कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक बार हिंदी में समझाता हूं. देखिए बेटा, एक बार हिंदी में समझ लो, एक बार लिख लो, पूरा लिख लो जल्दी से, एक बार लिख लो. बेटा समझ लीजिए, एक बार हिंदी में, एक बार हिंदी में देखो बेटा, टोटल 30 lakhs का एक्सपेंडिचर है. 30 lakhs का एक्सपेंडिचर है. देखो 30 lakhs का इंटरेस्ट कैसे आया, 200 है. 200 का लोन इंटू 15%. 200 लोन इंटू 15% कितना हुआ, 30 lakhs. अभी देखो फेज 1 और फेज 2 ये आपके कंस्ट्रक्टेड है. 6 महीने के बाद आप रेडी टू यूज भी कर दोगे. तो अप टू 6 months आप रेडी टू यूज करोगे. एंड फेज 3 एंड फेज 4 ये आपके यूज होने बाकी है. मतलब आप अभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए. अभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए तो फेज 3 और फेज 4 का इंटरेस्ट ये आपका कैपिटलाइज होता रहेगा. जिस दिन आपने रेडी टू यूज कर दिया, जिस दिन एसेट आपका रेडी टू यूज होगा, उस दिन आप क्या करोगे बेटा, फेज 1 और फेज 2 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना स्टॉप कर दोगे. कैपिटलाइज करना स्टॉप कर दोगे. आया समझ में. एंड फेज 3 और फेज 4 इसका इंटरेस्ट आप लोग कैपिटलाइज ही करते रहोगे. समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस. देखो 200 रुपए के 15% लोन, 30 रुपए का इंटरेस्ट. 30 रुपए का इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में डिवाइड करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से.
अभी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है बेटा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है 221। तो 221 को हम लोग कैसे डिवाइड करने वाले हैं? सो 221 हम लोग 34:64:55:68 रेशियो में डिवाइड करेंगे। जो फेजेस अभी भी चल रही है, जो फेजेस अभी भी कंटिन्यू हो रही है, फेज 3 एंड फेज 4, तो उसका इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज, उसका इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज। पर फेज 1 और फेज 2 आफ्टर 6 मंथ्स रेडी हो चुके हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स रेडी हो चुके तो बेटा इसका इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देंगे आफ्टर 6 मंथ्स। तो आफ्टर 6 मंथ्स मतलब कितना होगा? 4.61 प्लस 8.69 डिवाइड बाई 2, 6/12 करना है। ओके, हमने इंटरेस्ट को डिवाइड किया, 6 मंथ्स का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा और 6 मंथ्स का उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा, और 3 और 4 का कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा। सर, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर? Yes, how to present the answer? You can check. Yes, you can read the answer. इंटरेस्ट पूरा लिया है। सिक्सटीन पॉइंट कितना आया था हमारा? 16.7 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये आपका प्रेजेंटेशन, यस आई हैव गिवन यू। अच्छे से करो प्रेजेंटेशन को बेटा, पढ़ लो एक बार। चेंजेस है कुछ नहीं बेटा, हंसने का रीजन अलग था। वो वाइफ आके दशहरे के दिन किधर जाना है ये मुझे पूछ रही है और मैं आंसर नहीं दे रहा था, तो इसलिए मेरे सामने फनी फेसेस बना रही थी मुझे हंसाने के लिए, तो मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, ये रीजन था। स्क्रीनशॉट एट द एंड बेटा। बेटा ऑलरेडी वी विल एज्यूम कि कंस्ट्रक्टेड इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट ईयर। वी एज्यूम कंस्ट्रक्टेड इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर में ही स्टार्ट हो गया था। यस, सो ये रीजन था, बाकी कुछ नहीं। चलो, सो हाउ 30 इज डिवाइडेड इज ओनली 200। 200 इज अ बेटा लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट, एंड 15% इज 30 इंटरेस्ट। चलिए, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर टी वाई के 10। हाँ, रीड टी वाई के 10, रीड टी वाई के 10, लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक। सी, yes, I will answer it directly. Rainbow Limited borrowed an amount. Rainbow Limited borrowed an amount of 150 crores on 1/4/2011. Beta, I know accounting standards are very boring part, but for getting marks than other subjects, it is really very simple. I made my 100, I have given my 100% to make it very simple, but many of you are not taking it seriously. And listen to my words. By experience, I can tell you, after 3-4 months, you will be in pressure. And after first attempt,
Listen it carefully. After first attempt, you won't take it seriously. So first attempt is always best attempt. And give 110% of your devotion. 110%. No 99.99. Even 0.01% is difficult. And if you have your dreams to achieve, then beta there is no shortcut. Remember. देखो भाई, मैं सीए बन गया, 15 साल मेहनत भी कर ली, 15 साल के बाद कोई जाके मुझे नहीं बोलेगा स्टडी कर. इट्स माई पैशन टू टीच. जरूरी नहीं कि सेम बिजनेस आई शुड कंटिन्यू. नो, नॉट एट ऑल. आई एम एट ऑल नॉट इंटरेस्टेड. If you ask me, sir, I'm interested in other businesses. But this degree gave me confidence. This degree supported me in my bad days. This degree helps me, to have trust of other people on me. Okay, because they see Sanket sir as a respectable person in the society. So this degree gives me confidence because society knows. Society means not our housing society, overall. Ki that person, you can keep trust on him because he's a chartered accountant. He cleared the toughest exam of India and therefore they have trust on me. See, this degree is not complicated. But after one attempt, if your eyes are getting open, it's of no use. Always remember, from very first day, you focus on your targets, take small steps. I'm not saying that you should not enjoy. You can enjoy. But one day, in 2 weeks, it's okay. Out of 14 days, you must work for 13 days at least. And one day, you can take a rest. But in a month, only 2 days. Okay. Even if you are ill, still you have to do your job compulsorily. You have to do your hard work consistently. And this is only the key for your success. So see, beta, I'm not a motivational speaker, but I'm a person who can always give you guidance. You don't have to worry about your, you can think accounting standards are very boring part, but don't think that word. You try to finish writing part, 100 pages part, you will enjoy your accounting standards. Yes. So please enjoy कीजिए accounting standard को. आपकी नोटबुक को कंप्लीट करो. एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड्स चल रहे वो हमेशा कंप्लीट करो. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ब्रेक के पहले का. यस यस बेटा, मेरा सिर्फ बीच बीच में मैं बोलता रहता हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं यार. आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारे एम से यार घिसा पिटा लाइफ है हमारा, होता है. तो जब भी हमें ऐसा कुछ होता है हमारे लाइफ से हम लोग दूर हो रहे हैं, तो बेटा तुम्हारी एज क्या है? मेनी ऑफ यू एक तो ऐसे एज में हो कि जहाँ पे बेटा हमें रिश्ते बनाने को अच्छे लगते हैं, रिश्ते निभाने से. तो मैं समझ भी सकता हूँ बाकी इंडिया अदर स्टूडेंट्स, अरे वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड मैं FY SY TY वही घिसा पिटा लाइफ, फाउंडेशन होने के बाद इंटर के बाद फाइनल. कुछ लाइफ में सब मजे ही नहीं है. ये लाइफ तो कैसा होना चाहिए सर? यस, किसी के साथ एंजॉयमेंट करने की इच्छा है, पर मेरा लाइफ वैसा नहीं बेटा. लाइफ टाइम एंजॉयमेंट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार डिग्री तो ले लो अच्छी खासी. मुझे समझ सकता हूं मैं आपके फीलिंग्स को. यस. चलो, रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट. बेटा सीए डिग्री, वन स्टूडेंट आस्क मी कि सर आपका टीचिंग इज योर पैशन, सो व्हाई डिड यू कंप्लीटेड सीए? बिकॉज इफ आई कंप्लीटेड माय MCom and BCom, and if I entered into the teaching field, beta, definitely I couldn't teach
CS students in that case, and I'm not getting satisfaction by teaching to BCom students. Okay, so थोड़ा higher level को अच्छा लगता है ना सिखाने को, थोड़ा level high. So 11 12 standard I got many offers, but I rejected them. Why? Because I don't think that I prepared for 11 12th or BCom classes. Yes, always for you people. चलिए, Rainbow Limited borrowed an amount of 150 crores for the construction of the boiler plant at 11%. The plant is, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया भाई? Okay. The plant is expected to be completed in 4 years. Since weighted average cost of capital is 13%, the accountant of Rainbow capitalized 19.5. Now, what is weighted average? For this, you have to wait for some time. I will teach you this top problem after break. So break के बाद बहुत important session रहेगा, weighted average versus specific borrowing का rate. So ब्रेक के लिए रुक जाइए एंड वी विल मीट एट 7:50. सो जल्दी से ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलेंगे 7:50 को. 7:50. यस. अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की मैच मत देखते बैठिए, क्योंकि अफगानिस्तान वैसे भी जीतने वाली है. तो आप लोग कृपा करके खाना खाइए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए. 7:50. थैंक यू. मनीष जी ब्रेक ले लीजिए. मनीष जी ब्रेक ले लीजिए.
Welcome back, welcome back, welcome back. Once again, welcome back. So now we are going to start with the question of specific borrowing versus general borrowing. So what is specific borrowing versus general borrowing? First come to question number 2 and then we'll see the theory part. Okay. So theory के लिए थोड़ा सा धैर्य रखो. Come to illustration number 2. Specific borrowing versus general borrowing. Beta, on Wednesday, we are going to start with a new fresh accounting standard. And that accounting standard name is might be intangible assets. तो हमारा next accounting standard होगा intangible assets. Very, very important standard. One of the important standard है. उसके बाद then सबसे difficult standard बोल सकते हैं S19 होगा leases. Okay. तो next accounting standard 26 होगा and then I will start with leases. So बुधवार को फ्राइडे सैटरडे 2 days फॉर लीजेस एंड बुधवार को हम लोग करेंगे S26 इनटेंजिबल एसेट्स. तो बने रहना बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी इजी. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 mark as IMP illustration. Very very important illustration of S16 which will give you clarity about general borrowing versus specific borrowing. And theory part we will cover it later. Theory हम लोग बाद में करेंगे पर पहले हमें क्या करना है? पहले हमें करना है illustration number 2. X Limited began the construction of new building on 1st January 2001. तो बेटा 1st January 2001 को we have started with the construction. For this, they obtained 1 lakh का special loan to finance the construction. So special loan is specifically for constructing the building. So this is called as specific loan, specific borrowing. You can write over there. Specific मतलब क्या? Related to construction contract. Related to construction contract. ठीक है? Easy. Now, they started the building construction on 1st January at interest rate of 10%. Interest rate कितना था? 10% is the interest rate. But I am not going to tell you any question. Now I will take your questions after 15 minutes after this question. So interest rate 10%. Specific borrowing का interest rate. Other outstanding to specific loans, non-specific loans is called as general borrowings. General borrowings. General borrowings, we use weighted average rate. Weighted average rate. Now what is weighted average rate? Wait. 5 lakhs and 9 lakhs, 11% and 13%. So loan rate 13% for 9 lakhs. 9 lakhs is on the higher side and interest rate is 13%. If we take simple average, 11 plus 13 divided by 2, 12% is not allowed. We use weighted average. You can write over there. Weighted average is total interest upon total loan. अभी total interest कितलो छे? That we have to calculate. Total loan I can show you 14 lakhs. Can you tell me what is total interest?
कैन यू टेल मी टोटल इंटरेस्ट? आप बता सकते हो क्या टोटल इंटरेस्ट कितलो छे? टोटल इंटरेस्ट कितना है बोलो? 55,000, 1,62,000, sorry, 1,17,000, 9 lakhs into 13%, 1,72,000 divided by 14 lakhs in percentage, 12.28, take up to 4 digits, 5957 percentage. What is the answer? 12.2857 percentage. Yes. Path Rana correct. Divya correct. Surendran correct. Kadambari Beda correct. And Komal or Divya Kumari भी correct है. So weighted average rate is 12.2857%. Now see the expenditure. Expenditure were made on the building project are as follows. January. So first expenditure, December ending tak. So you use this money for full 12 months, January to December. This second expenditure is on April. So 9 by 12. July, 6 months, 6 by 12. And December is 1 by 12. तो जनवरी का आंसर आएगा 2 lakhs. Then अप्रैल का आंसर आएगा 2,50,000 into 9 by 12, 187,500. जुलाई में means 4,50,000 into 6 by 12. Why July to December? 2,25,000. And this is 10,000. So total loan expenditure, equivalent expenditure, monthly expenditure. So you won't consider this expenditure total, but you will multiply. So 10,20,000, definitely not. You are going to consider 6,22,500. See beta, out of 6,22,500, 1 lakh rupees ka loan is a specific borrowing. So general borrowings for expenditure, beta January, December is year ending beta. December is year ending. Swati, December is year ending. So 1 lakh we multiplied by specific rate 10%. And बचा हुआ 5,22,500 you will multiply it by 12.2857%. $64,192 plus 10,000. So capitalize 74,192. You can check the answer. 3 rupees ka difference. Yes. 74,189. So building account debit to bank. The total expenditure is 10,20,000.
asset account debit to bank. So this is entry for asset account debit to bank. Plus 1020 plus 64,192. So 10 lakh 74,192 plus 10 lakh 20,000 plus 74,192. 10 lakh 94,192. Our answer and institute answer difference is 3 rupees. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. Yes, you can write this. July to December, beta, Matiya. It is from July to December. January to December. April to December. 1st April. 1st July to December. 1st December to 31st December. 31st December. देखो बेटा, एक बार हिंदी में समझ लीजिए. देखो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग वर्सेस जनरल बोरिंग. ध्यान देके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. स्पेसिफिक बोरिंग वर्सेस जनरल बोरिंग. अभी जनरल बोरिंग क्या होता है? स्पेसिफिक बोरिंग मतलब मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया 1 लाख रुपीज का स्पेसिफिकली. और कुछ बोरिंग्स बेटा मैं जनरली मतलब ऐसा बोलता नहीं हूं लोगों को जाके कि मुझे बिल्डिंग के लिए लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए. अभी मैं वो कहाँ पे यूज करूंगा? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, मैं बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, या मैं मटेरियल भी लेके आऊंगा, या लेबर का पेमेंट करूंगा. ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. तो दो टाइप के बोरिंग्स है. एक स्पेसिफिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, या एक जनरल बोरिंग लिया. अभी स्पेसिफिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया है वो 10% से है, और जो जनरल बोरिंग है वो 11% और 13% से है. अभी सिंपल एवरेज बोला तो 11 और 13 का एवरेज 12%, वो हमें लेना नहीं है. हमें लेना है वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज मतलब मैं अमाउंट को भी कंसिडर करूंगा और रेट को भी कंसिडर करूंगा. अभी देखो, 5 लाख का 11% से लोन है, 9 लाख का 13% से लोन है, तो भाई 13% के टूवर्ड्स लोन झुका हुआ है. तो झुका किसके पास बेटा? 9 लाख रुपीज के पास. 9 लाख रुपीज 13%, ये थोड़ी मेजर अमाउंट है. तो मेरा आंसर 11% के पास नहीं झुकेगा, 13% के पास झुकेगा. और 13% के पास ही झुका आंसर 12.2857%. 12.2857%. यदि आपने ये उल्टा रेशो किया, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, 9 लाख 11% से सिर्फ समझा रहा हूं, एंड 5 लाख 13% से, तो आंसर 11% के टूवर्ड्स झुकेगा. चेक करो. 9 लाख 11% लिखो मत, डोंट राइट इट. 99,000 एंड 5 lakhs इंटू 30% मतलब 13%, 65,000. सो 65,000 प्लस 99,000, 1,64,000 डिवाइड बाय 14 lakhs. आंसर आया 11.71. आंसर किधर झुका? 11% के पास. सर यही होता है वेटेड एवरेज. वेट जिधर ज्यादा इंटरेस्ट उधर ज्यादा. वेट 9 लाख के टूवर्ड ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी 12% से ऊपर आएगा, 13% के पास आएगा. सर क्या बढ़िया पढ़ाते हो. वेटेड एवरेज तो हमें समझ में आ गया. अभी क्वेश्चन है, सर ये तो इंटरेस्ट हुआ मेरा 12.2857%, ये इंटरेस्ट रेट हुआ. अभी मैंने खर्चा कितना किया? सर खर्चा तो वैसे किया, जनवरी में किया, अप्रैल में किया, जुलाई में किया, दिसंबर में किया. सर इंटरेस्ट तो पूरे इसको नहीं लगेगा, जैसे जैसे अमाउंट निकालोगे वैसे वैसे इंटरेस्ट लगेगा. तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख पूरे साल भर के लिए था, 12 महीने, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरा 12/12 लिया. अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने का, 9 महीने का इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट किया. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर. जुलाई टू डिसंबर 31st, जुलाई टू डिसंबर 31st 6 महीना हुआ. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. एंड दिसंबर 1st टू डिसंबर 31st 1 महीना हुआ. ये सबको कन्वर्ट किया एक इक्विवेलेंट में. वैसे तो खर्चा किया 10,20,000, पर पूरे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. जैसे खर्चा करूंगा उसके हिसाब से, लोन तो मैंने पहले दिन पे लिया, पर इंटरेस्ट जैसे जैसे मैं विड्रॉ करूंगा अमाउंट, वैसे वैसे बेटा खर्चा करूंगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट लगेगा. तो 622,500 मेरा इक्विवेलेंट खर्चा आया. उसमें से 1 लाख तो मैंने स्पेसिफिकली लोन के लिए लिया था, तो 6,22,500 में से 1 लाख तो स्पेसिफिक बोरिंग था, उसके ऊपर 10% आएगा. एंड जनरल बोरिंग मेरा 522,500 बच जाएगा, जिसके ऊपर मैं 12.2857% से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरा
इंटरेस्ट आएगा 64,192 और दोनों का मिला के आया 74,192 जो इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज करूंगा, इससे ज्यादा ना इससे कम। ओके, पूरा का पूरा बता चुका हूं। यस, then now the question is, sir, how to present the answer? और आंसर प्रेजेंटेशन देखो यहां पे है, आंसर का प्रेजेंटेशन है। तो जनरल बोरिंग हम लोग कंसिडर करते हैं पर प्रेजेंटेशन जो 6, ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्लांट प्लस इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज वर्किंग नोट 1, 1 + 2 10,94 189, 3 रुपए का डिफरेंस है हमारे इंस्टीट्यूट के आंसर में। अब भी निकाला, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से है। 1 लाख इंटू 10%, 10,000 आया, और जो बचा हुआ 522 500 इंटू 12.2 at 5%, यह आया 74,189, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, इनके हिसाब से कैलकुलेट किया। स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग, इंटरेस्ट रेट ऑन जनरल बोरिंग विल बी 11% एंड 13%, सिंपल एवरेज आया तो 12%, 12.285%, एंड जनरल एंट्री होगा 10,94,189, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन लोन को भी पर्टिकुलर अमाउंट इक्विवेलेंट मंथ से मल्टीप्लाई करना 12/12 बिकॉज इट इज टेकन ऑन द फर्स्ट डे। इक्विवेलेंट लोन, इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, इक्विवेलेंट लोन से ही मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज all for the आंसर पार्ट। आया समझ में बेटा? एकदम इजी है। से यस और नो, स्क्रीनशॉट बाद में रहे। 1 लाख एज अ स्पेसिफिक बोरिंग, पूजा गुप्ता, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, स्पेसिफिक बोरिंग दिया हुआ है ना, 1 लाख आपने उसी के लिए तो लिया। क्या कर रही हो बेटा पूजा? ऐसा मत करियो बेटा, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा बेटा तेज करने की कोशिश करो खुद को, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। अरे वाह, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ अंडरस्टूड गुजराती। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, इजी छे। Oh, let's come to theory first. Now we are going to start with the theory, sir. Illustration 3, 4 is your homework, and TYK. Yes, but I am going to explain it in the next session. Abhi hum log फटाफट we are going to see the theory part. Okay. So substantial means what? Examples: manufacturing plant, qualifying asset. Manufacturing plant will take more than 1 year to generate this plant. Okay. So it's not one day plant. Manufacturing plant, it takes time. Power generation facilities. So but in big companies, you know, power generation will take some time to construct that project, and therefore it is power generation plant. But in inventory, I already taught you. In inventory, I already taught you the name. Inventory is required for which takes substantial time to bring them to a saleable condition. Can you give me the example which I already, and I told you at that time, S16 mein pura concept you will get clear that inventory also they added interest as per S16, and today you got that reference. You can see it in your 100 pages book. You have written over there in chapter number 2, inventory valuation, that inventory's interest is added if it is qualifying. So which inventory is qualifying? But I have given you the example also. This inventory takes substantial time to get ready. What is the example beta? जो example है, कौन याद करेगा example? Let's see who is answering that inventory का example. Oh, Swati is my genuine student. नो बेटा, प्रिंस बिल्डिंग कैसे आएगा बेटा? इन्वेंट्री बिल्डिंग होता है क्या इन्वेंट्री में? नो भाई, बिल्डिंग नहीं होता है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में एग्जांपल मैंने दिया था और वो एग्जांपल स्वाति ने गिवन करेक्टली। सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट आंसर इट करेक्टली, ओनली वन स्टूडेंट। नो 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 बेरर प्लान्स। बनवरी जी, यस बेटा, गुजरात की छोरी, इसने बराबर आंसर दिया है। गुजरात की मेरी छोरी ने आंसर बराबर दिया है। यस, और कौन कौन है?
यस बेटा, और किसने आंसर करेक्ट दिया है? लेट्स चेक इट। एंड स्वरूप सहाय जी, ईआरओ का मेरा बंदा। यस, कोलकाता का क्या बेटा, ईआरओ का है, तो कहां से हो स्वरूप जी आप? सहाय जी, ईआरओ के बंदे ने करेक्ट आंसर दिया है, वैष्णवी ने। और सबसे तेज साउथ की छोरी स्वाति, इसने आंसर दिया है। यस, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज वाइन इज द एग्जाम्पल विच आई गिवन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वाइन टेक्स substantial time to get ready for its intended use. आहा, प्रिंस ने दिया एग्जाम्पल। और स्वरूप भाव ओडिशा से है। ओके, आई थॉट वेस्ट बंगाल। ओके, ईस्टर्न से है तो। चलिए, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट? सर, इंटरेस्ट का कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट हैज टू बी कैपिटलाइज ऑन क्वालिफाइंग एसेट। सर, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड। इफ एसेट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम, तो वी आर गोइंग टू एड इट। सर, वी ऑलरेडी नो। एंड yes beta, you are correct, Keshav Chaudhary. Others non-qualifying asset interest has to be transferred to profit and loss account. एकदम सिंपल सिंपल छे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही वाले दो रे हमारे। ये प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज सर, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ओके, सो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली होगा तो ये होने वाला है। बोरिंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरिंग्स, स्पेसिफिक बोरिंग सर, specific borrowing. Yes, now only we have seen particular to obtain a particular qualifying asset, then that interest is has to be capitalized. That interest has to be capitalized. So particularly specific borrowing. अभी देखा ना भाई, 1 lakh के ऊपर 10%, 10,000 specifically you added it. Okay, and borrowing costs are readily identifiable. Okay, and deduct any income. Deduct any income earned from the asset. And if it is general borrowing, we use weighted average method. Compute capitalization rate. Capitalization rate is total interest upon total capital. Capitalization rate, total interest, that is the borrowing cost, upon total borrowings. Weighted average of borrowings. Second one, amount eligible for capitalization. And third one, cross check. Yes, now this is very important. Whatever the borrowing cost, it should not exceed your total interest cost. Now, beta, when to commence? Yes, now we are at the end of this. Commencement means when you start your capitalization. Later, all three condition has to be fulfilled. Huh? All three. Expenditure incurred. Sir, expenditure incurred होना चाहिए था. Loan taken होना चाहिए था. Borrowing cost, मतलब loan लिया तो interest has to be incurred. And third one, activities necessary to make asset ready are in progress. So expenditure incur करना चाहिए. लोन भी लेना चाहिए. Now loan taken, but interest expenditure is not incurred. No, whatever interest, revenue expenditure. Sir, expenditure incurred, loan is not taken, so no borrowing cost. So first one, you should borrow loan, you should incur expenditure, and these expenditure are necessary to make the asset ready. Once asset is ready, stop your capitalization. Stop your capitalization. So you are already aware about this. मैं वापस एक बार दोहराता हूं, हिंदी में दोहराता हूं. देखो बेटा, आपको बोरिंग कॉस्ट जो है ना, आपको बोरो मतलब लोन अपने लेना चाहिए. लोन अपने लेना चाहिए. सर, डिडक्ट एनी इनकम अर्न फ्रॉम दी एसेट. एग्जाम्पल. ओके बेटा, विल गिव यू द एग्जाम्पल. सो सबसे पहले ये समझ लीजिए, लोन लेना चाहिए. सर, सिर्फ लोन लेके काम नहीं चलेगा, खर्चा भी करना चाहिए. लोन तो लेके रखा, पर हमने एसेट बनाने को ही नहीं लिया, तो एसेट बनाने के लिए खर्चा भी करना चाहिए. और वो एसेट बनने तक, मतलब एक्टिविटी जो है जब तक प्रोग्रेस में है तब तक कैपिटलाइजेशन शुरू होगा. सर, लोन लिया पर एक्सपेंडिचर नहीं किया, तो जो भी इंटरेस्ट है वो P&L में जाएगा. लोन ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता है. एक्सपेंडिचर इनकर किया पर लोन ही नहीं लिया तो काय को बोरिंग कॉस्ट होगा. तो ये ध्यान में रखो. तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. all conditions has to be fulfilled. Say yes or no. ठीक है. Then suspension. Suspension means beta temporary delay.
temporary, and permanently stop. Temporary stop is suspension. Temporary stop is called as capitalization. Temporary capitalization stop means temporary revenue expenditure. When temporary you stop this activity, when capitalization of borrowing cost is suspended. Suspended when active development is interrupted, because you stopped your active development, you stop your activity. Construction of shed, you stop for some time, but your loan interest meter is going on. So interest meter is going on, so that interest is a revenue expenditure when you stop your activity. But it is not suspended. Though it is a interruption, but it is not suspended when technical and administrative work is being carried out, or it's a part of your necessary part of your delay. For example, I am constructing one shed. See example, I will give the example. I started my construction in the month of May. Okay, in the month of May, and I know in June, July, there is rainy season. So water level, construction is going on, but sometimes what happen, water level is increased. Water level is increased and my work is temporarily delay, and it's a part. It is not key compulsory I have to stop. But better when there is a strike of labor, when there is a strike of labor and my work is interrupted, so active development is interrupted. If it is a part of that activity, then don't stop. Your interest is capitalized. Okay, your interest is capitalized. But if it is not a part and there is development, active development is interrupted. For example, here example is labor strike. Labor strike is the example where your active development is going to interrupt. But suppose if your active development is interrupted because of it is a requirement of your work, then बेटा it is not suspended. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. तो हिंदी में हमें ये समझ के लेना है बेटा, देखो आपकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो चुकी है. और ये एक्टिविटी क्यों स्टॉप हो चुकी है? क्योंकि आपका लेबर जो था ना, वो आपसे गद्दारी करके बेटा वो लेबर ने स्ट्राइक कर दिया कि मेरा नेता कैसा हो जो हमें पेमेंट ही नहीं करता हो, ऐसा हो गया है, इसलिए उसने स्ट्राइक कर लिया है. तो वो जो स्ट्राइक होगा, तो वो केस में जो भी इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा, वो इंटरेस्ट का मीटर चालू रहने दो, पर जो इंटरेस्ट है वो पी&एल में डालना है. ओके, सो जो भी इंटरेस्ट होगा वो पी&एल में डालना है, इतना याद रखना. और जहां पे आपका एक्टिव इंटरप्शन, ये पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन होगा, तो बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि सीमेंट हमने स्लैब डाल के रखे, और देखो आपने बेटा आप फोर्ट बनाते थे. महाराष्ट्र में ना किला बनाना होता है, इसको फोर्ट बोले तो किला बोलते हैं. और जब हम लोग फोर्ट बनाते हैं ना बेटा, तो बचपन में तो आपको ने देखा होगा, जो महाराष्ट्र से बच्चे उनको ये जानकारी होगी, तो जो वो लोग किला मतलब फोर्ट बनाते टाइम ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखते और पूरी मिट्टी वहां पे लाके डालते. और मिट्टी बेटा गाढ़ी मिट्टी कब होती है, मतलब वो फोर्ट अच्छे से कब बनता है, हम उसके ऊपर पानी मारते हैं, और पानी मारने के बाद वो पूरा मिट्टी जो है ना, वो सूखने के बाद एक नंबर आपका फोर्ट तैयार होता है. मतलब किला ये बहुत महाराष्ट्र का प्राचीन ये होता है बेटा, ये ध्यान में रखिए. तो ये जो हम लोग बनाते थे, तो ये पानी मारना वैसा ही स्लैब का होता है. स्लैब मार करते टाइम आपने कभी सुना होगा कि एक 15-20 दिन उसको कंटिन्यूअसली पानी के प्रेशर से ना, सिर्फ आपको पानी मारना होता है वो स्लैब के ऊपर. और जब वो पूरा का पूरा ऐसा मिक्स हो जाता है और एकदम स्ट्रांग हो जाता है, उस टाइम पे बेटा आप फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन चालू करते हो उसके ऊपर. तो ये सब पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी. और जब ये पार्ट ऑफ द एक्टिविटी होती है, तो आप लोग नहीं बोल सकते कि हमने स्टॉप करवाया रे, हमने काम नहीं स्टॉप करवाया. तो उस केस में आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो कैपिटलाइज ही करते रहना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मत ट्रीट कीजिए. जब इट इज नॉट सस्पेंडेड, ये ध्यान में रखिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी. यस, cessation, स्टॉप कीजिए कैपिटलाइजेशन करना. when asset is ready to use, asset is ready to use, तो आप क्या करोगे? all activities, जितने भी activities होती है are completed, and construction is completed in part, and completed part is ready. For example, you have 10 buildings in one society. You started with first society, first building, then beta that first building completed, you will see that phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, that question रे, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 3 and phase 4 का capitalize किया, phase 1, phase 2 का stop किया after 6 months. Disclosure standard is at the end. Accounting policy adopted for the borrowing cost, so that interest has to be capitalized, and amount of borrowing cost, how much is capitalized during the year. Yes,
Brain Gym XY X Limited is commencing a new construction project. ध्यान देना. Which is to be financed by the borrowings. The key dates are identify the commencement date. 15 मई को लोन लिया. 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हुआ. 19 जून को एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड and construction work commences. Beta, correct answer is 19th June is the correct answer. 19th June, when you started your expenditure, because loan is already taken. So that date we will not consider. So 19th June is the correct answer. Second one. If amount eligible for capitalization in case of inventory as per S16 is 12,000 and my cost of inventory 40,000. This is IMP question. Huh? We are going to write it in 100 pages book. 12,000 plus cost of inventory is 40,000. So total cost is 52,000, but NRV is 45,000. NRV is 45,000. So 40,000 में से only 5,000. So out of this only 5,000 will be added. So correct answer is B. 45,000 ही फाइनल आंसर होगा. So 40,000 में और 5,000 ही ऐड करोगे. 5,000 is added. Capitalization rate considers borrowing cost on general borrowings, borrowing cost on general and specific borrowing, borrowing cost on specific borrowing or none of above. अरे general borrowing रे. Capitalization rate मतलब weighted average cost. What is capitalization rate? Weighted average cost. Weighted average cost. उसको बोलते हैं second name capitalization rate. And weighted average cost is calculated only in case of general borrowing. Which of the following is the correct answer? Entire exchange rate is reduced from the cost of qualifying asset. No. Loss is added to qualifying asset. Yes, yes, yes. No adjustment is done on exchange loss. बेटा ये मैं आपको बताऊंगा. I think नो एडजस्टमेंट नहीं है वो. मैं आपको ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. मैं इंस्टीट्यूट से ये करवा के लूंगा. S16 is qualifying asset except manufacturing plant. Yes, it is qualifying asset. Power generation facility. Yes. Inventory that requires wine. Yes, wine आएगा. Asset those are ready for sale. No, 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 no. Ready for sale नहीं आएगा. None of above. So C is the answer. Thank you, my dear. Now it's time to take screenshots, and if you have any query, you can ask me in the next session. I hope you enjoyed today's session. आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा. And time to take screenshots. हाँ, यस बेटा, वो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा. हरि सिंह जी, नेहा बोल रही यस सर, दिवाली में बनाया था. S16 is different from S7. S7 in the books of contractor. S16 those who are constructing the qualifying asset for them. Okay, it's not only for construction of shed. तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ये है 400 पेजेस के बुक का स्क्रीनशॉट. ले लीजिए फटाफट. ओके, जय पटेल, करीशु करीशु, डोंट वरी. यस, इंडेक्स ऑफ 10 एंड 13 प्रोवाइड कीजिए. स्क्रीनशॉट के साथ ये भी आ रहा है.
Third is your homework. Fourth is your homework. You will understand it by reading it. Don't worry. Yo, over. Don't give up. The standard is very simple. हाँ जी sir, Harish ji, Harish Singh ji, you are correct. Ten number. 10 number must question है एक category question. टेम्पररी इनकम का मीनिंग होता है भाई मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड चालू किया एंड आई हैव गिवन दैट बिफोर कंस्ट्रक्शन yes I have some empty space so I have given that on rent so whatever income I earned from that will be deducted from the interest cost. So we already covered in S10 also. And if I don't want to keep that money idle, so I kept it somewhere is also, and I earned some income out of this is called as, yes, 100 pages book. Concept wise, you have to write it in 100 pages book. All illustrations, you have to write it in the 400 pages book, my friend. So this is what you have to write in a 100 pages book. Concept 2, foreign currency borrowings. We are aware about this example. Yes. Then foreign currency borrowings, I have given you one example of their interest rate, which is very simple. Examples of qualifying asset and treatment of borrowing cost. Very, very simple, sir. Commencement and suspension. You can write it one after one. All and this is the important question at the end after disclosure. Chalo. So, my dear friends, S10 और 13 का किसी को तो ये चाहिए था इंडेक्स. S10 का इंडेक्स है ये. S10 का इंडेक्स है ये. Sixteen.
कंपोनेंट अकाउंटिंग का एक बढ़िया क्वेश्चन था, A++ कैटेगरी का। एंड 17-18 is the last part. 13 number. थर्टीन का बेटा आई विल गिव इट लेटर। 13 का डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स बिकॉज इट्स स्टिल रिमेनिंग, तो मैं 13 का बाद में दे दूंगा। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड इट टुमारो। हॉलीडे है शायद से, बुधवार को भी हॉलीडे है क्या बेटा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बुधवार को भी हॉलीडे है क्या मेरा? नहीं ना, आई थिंक आई हैव सेशन ऑन वेडनेसडे। यस, सो गुड नाइट प्रिंस एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। जो भी रावण है आप में से मार दो बेटा और अच्छे से पढ़ाई को लग जाओ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।